Hello everyone, welcome back to our BTechInfo channel. Now, today we are going to understand one of the most important topics in the dairy industry, which is fermented milk products. So, let's start with the definition. Fermented milk is a product obtained by fermentation of milk, which may have been manufactured using other permitted raw materials by the action of suitable microorganisms and resulting in a lowering of pH with or without coagulation. फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो मिल्क या मिल्क सॉलिड से बनाए जाते हैं जहां स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं जो कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो हमारा पीएच होता है वो डिक्रीज होता है और कोआगुलेशन होता है। तो इससे हमारा नया टेक्सचर और एक नया फ्लेवर डेवलप होता है और ये प्रोसेस हमारा जो है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू और इसका सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करता है। Now we see the importance, like it enhances the flavor, texture and palatability. It increases the nutrient availability. Example, vitamin B. Act as a probiotic food, promoting gut health. Exhibits therapeutic effects, anti-carcinogenic and hypocholesterolemic and anti-hypersensitive. Now we see the classification or the types of fermented milk products. First one is lactic. Example is dahi, yogurt and dominant microorganism which is lactic acid bacteria. Second one is acid alcoholic. Example, kefir, kumis. Dominant microorganisms, lactic acid bacteria plus yeasts. Third one is high acidic. Example, Bulgarian sour milk. Dominant microorganism, lactobacillus bulgaricus. Fourth one is medium acid. Example, acidophilus milk, yogurt. Dominant microorganisms, lactobacillus acidophilus S. thermophilus. Fifth one is low acid. Example, cultured buttermilk, sour cream or dahi. Dominant microorganism, mixed lactic acid bacteria. Now, what is dahi? Dahi or a curd means the product obtained from pasteurized or boiled milk by souring, natural or otherwise, by harmless lactic acid culture or other harmless bacterial culture used with lactic acid bacteria for souring. Dahi may contain added cane sugar and should have the same fat and SNF content as the milk from which is prepared. Now microorganisms used, मतलब इसमें कौन कौन से हम microorganisms use कर सकते हैं? Examples are Lactococcus lactis subspecies lactis, Lactococcus lactis subspecies cremoris, Leuconostoc mesentoroides and Lactobacillus delbrueckii subspecies vulgaricus. So these lactic acid bacteria can convert the lactose into the lactic acid, which coagulates the casein and gives the curd its texture and flavor. Now we see the manufacturing process of dahi. First step is milk selection. Now we will select the milk, like हमारा cow है या buffalo milk है. आफ्टर द सिलेक्शन वी डू द फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप इज फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन. ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो डस्ट है, डर्ट है, इम्प्योरिटीज है, ये हम रिमूव कर सकें मिल्क से. थर्ड स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं? फैट और एसएनएफ को एडजस्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से. फोर्थ स्टेप इज प्री हीटिंग विच इज़ यूजली डन एट 60 डिग्री सेल्सियस टू इम्प्रूव द होमोजेनाइजेशन एफिशिएंसी. बिकॉज जो हमारा होमोजेनाइजेशन टेम्परेचर होता है वो अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारा उसमें होमोजेनाइजेशन एफिशिएंट होता है. नाउ फिफ्थ स्टेप इज होमोजेनाइजेशन. आफ्टर द होमोजेनाइजेशन वी विल डू द पास्चराइजेशन अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 minutes. नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज कूलिंग. आफ्टर द होमोजेनाइजेशन पास्चराइजेशन वी डू द कूलिंग अबाउट to about 22 to 25 degree Celsius, which is ideal situation for the inoculation temperature. Now we do the inoculation. We add the 1 to 2% of active starter culture like LAB. After the inoculation, we do the incubation of about 16 to 18 hours at 23 to 25 degrees Celsius until the pH reaches to 4.6. After the incubation, we do the cooling and storage at 5 degrees Celsius to stop the fermentation. Now the types of dahi. In the North India, we have products like dahi, lassi. In the South India, we have dahi, buttermilk. In the East India, we have mishti dahi, and in the West India, we have srikhand, chakka and chas. Now, what is yogurt? So yogurt is a fermented milk product obtained through the action of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus acting symbiotically. यानी दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं सिम्बायोटिकली. कौन कौन से? एस थर्मोफिलस और आपका एल डेल्ब्रुकाई सबस्पेसीज वल्गैरिकस. नाउ स्टार्टर कल्चर कंपोजिशन. वी हैव स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस विच इज कोकाई एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई सबस्पेसीज वल्गैरिकस विच इज इन रॉड शेप्ड. इट मीन्स रॉड्स एंड कोकाई सिम्बायोटिकली प्रोड्यूस द टिपिकल योगर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब हम दोनों को ही एक साथ जो हम 1:1 के रेशियो में ले रहे हैं, तभी हमारा एक टिपिकल योगर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर आ रहा है.
अगर हम इंडिपेंडेंटली किसी एक को यूज करेंगे तो हमारा जो आइडियल बैलेंस ऑफ एसिड एंड फ्लेवर है वो नहीं हो पाएगा. सो कीप इन माइंड. नाउ वी सी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ yogurt. फर्स्ट स्टेप इज मिल्क सेलेक्शन. आफ्टर द selection of milk like whole skim milk or partly skim milk, we do the standardization. After the standardization, we do the homogenization, and homogenization temperature should be 50 to 55 degrees Celsius, and it is done at the pressure of 6.9 megapascal. After the homogenization, we will do the pasteurization of the milk, it is done at 85 degrees Celsius for 30 minutes, and then we cool to the 45 degrees Celsius because it is important for the inoculation. So now we do the inoculation and add 1.25% by weight of active culture of Streptococcus thermophilus and 1.25% of Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus. It means 1:1 ratio should be done both the cultures. After the inoculation, we do the incubation, and incubation should be done at 42 degrees Celsius for about 4 to 6 hours until the pH reaches to 4.5. After the incubation, we do the cooling and storage and rapid cooling to 5 degrees Celsius. Now we see the types of yogurt. We have set, stirred yogurt, drinking yogurt, frozen yogurt, strained yogurt, or probiotic yogurt. You can see this chart. Now we see the difference between dahi and yogurt. First of all, origin. Dahi is indigenous Indian product and yogurt is Western origin product. Starter culture. Dahi is made from the mesophilic lactic acid bacteria, which is Lactobacillus lactis and Leuconostoc. But yogurt is made from the thermophilic lactic acid bacteria like S. thermophilus and L. bulgaricus. Third one is incubation temperature. For dahi, the incubation temperature should be 22 to 25 degrees Celsius, but for yogurt it is 42 to 45 degrees Celsius. Fermentation time. For dahi it is 14 to 18 hours. For yogurt it is 4 to 6 hours. Texture. Dahi texture should have soft, slightly grainy, but yogurt should be smooth and creamy. Flavor. Dahi should be mildly acidic, but yogurt should more acidic and aromatic. Now we see the FSSAI microbiological standards for fermented milk. So you can see this chart. Coliform 10 to 100 per gram, E. coli absent per gram, Salmonella absent per 25 gram, Shigella absent per gram, Staphylococcus aureus 10 to 100 per gram, yeast and mold 50 to 100 per gram, Listeria monocytogenes absent per 25 gram, phosphatase test should be negative. So this was all about the fermentation of the milk and milk products. So thank you everyone.